हेलो एवरीवन नमस्कार। तो आम लास्ट क्लास छाड़ी कौचे ना नॉन कॉर्डेट्स पांचटा फाइलम आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी फ्रॉम कोरिफेरा टू प्लैटीहेल्मिन्थेस जाए। ओके तो नेक्स्ट आम आउ 5टा देखा। ये रहा सिलेबस अच्छे एंड सिलेबस आम कौन चलते नॉन कॉर्डेट्स अच्छे जेनता आसो कॉर्डेट्स टाइप फाइलम ता अंडर आम क्लासेस में पढ़ा। ओके फेनोफोरा प्लैटीहेल्मिन्थेस रास्किहेल्मिन्थेस आमर कंप्लीट हो जाइथिला। Okay, now come to the phylum Annelida. This is the six phylum of non-chordates under non-chordates. और non-chordates माने कौन ना जहाँ बॉडी को सपोर्ट करने पाई किसी स्केलेटल सिस्टम बॉडी रे नाही तामाने ना नोटोकॉर्ड प्रेजेंट अच्छी ना तो बैकबोन प्रेजेंट अच्छी। तो सेटा को हम कहूचे नॉन कॉर्डेट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच आर अंडर दिस फाइलम। ओके तो एनिलिडा देखो एनिलिडा फाइलम रो कौन कैरेक्टरिस्टिक्स रहउची एंड ता सहित तमरो कौन कौन तारो एग्जांपल रोचे। फर्स्ट होला एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। एक्वाटिक माने पानी रे रहंती टेरेस्ट्रियल माने लैंड रे भी से माने सर्वाइव करंती बट मोस्टली जोटा वाटरी लैंड ठीक स्टिकी लैंड थो और तमरो वेट लैंड टाइप रो कादो वाला और मॉइस्ट सॉइल थो से सब जगह रे से माने बेसी ग्रो करि पारंती एंड फ्री लिविंग। देन पैरासाइटिक माने किछि एनालिटिक स्पीशीज एमती अछंती जो माने कि अन्य मानको होस्ट बॉडी रे डिपेंड करिकि निजर सर्वाइव करंती। These are bilaterally symmetrical, triploblastic organ system label of organization, body organization, and metabolically segmented body. Why this is known as metabolically segmented body? यांको body रे जहाँ भी segmentations रहुची एटा होची clearly visible. That's why this is a metabolically segmented body. ये सेगमेंटेशन टा ओनली आउटर साइड रो बॉडी रे नाही बॉडी रो इनसाइड रे भी सेही सेगमेंटेड अछि। किछि सेगमेंट पर्यंत गोटे गोटे ऑर्गन्स हमको तांकर प्रेजेंट रहउची बॉडी भीतर। ओके बायलैटरल के सिमिलेटर का जानिचो बायलैटरल माने दीटा सेपरेट हे परतो ता माने सॉरी ओके तो कौन होची ना तमरो लेफ्ट और राइट इक्वल पार्ट रे जे डिवाइड हे परतो से माने आउछन बायलैटरली सिमेट्रिकल बॉडी अंडर आमे आगरो डिस्कस कर सारले। ट्रिप्लोप्लास्टिक ट्रिप्लो माने किछटा उठे तीनटा अछि त माने एटी कोन अछि ना 3 जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट एटा कोन ना एक्टोडर्म मेसोडर्म एंड एंडोडर्म तीनटा देखो जर्मिनल लेयर तांकर अर्ली स्टेज रे प्रेजेंट रहउची जोटो की फर्दर सेल सब प्रोडक्शन होउची। ओके एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन माने तांको बॉडी रे तांकर रिक्वायरमेंट हिसाब रे वर्साटाइल ऑर्गन्स ऑलरेडी प्रेजेंट अछि तमने सेल रो टिश्यूज रो ऑर्गन्स कंबाइन होती ऑर्गन सिस्टम पर्यंत तांको बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन अछि। ओके दे आर सेलोमेट ऑर्गन एनिमल्स तमने कोन ना ट्रू बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। ठीक है सब आम आगु पढ़ी खाली आउे मैंने रिकैप करने डिस्कस कर दूसरे। हैव लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स फॉर लोकोमोशन। लॉन्गिट्यूडिनल माने लेंथ वाइज एंड सर्कुलर माने तमरो कोन डायमीटर वाइज रहला मसल्स फॉर लोकोमोशन से मानकर मूवमेंट पाई से माने कोन करंती देखिथिबो सो आर्दम मानको एमती चाइल्ड मूवमेंट करंती ताको की हेल्प करे ताको लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प करे से लोकोमोशन रे। have closed circulatory system. Closed circulatory system माने ही circulation that is conducted through the different type of blood vessels, arteries, capillaries, हला veins ये सब present थिबो ता through रू ही blood जदि तमरा circulation होउची body रे throughout the body then सी असला के ना closed circulatory system। नेरे सोची गोटे तमरा example of annelida organism जे कि dioecious and aquatic animal। एक्वाटिक माने होची जे कि अंडर वाटर पानी रे सर्वाइव करूचे। डायोसियस माने नेरेस ऑर्गेनिज्म रो ग्रुप रे मेल सेपरेट अछंती ओके फीमेल सेपरेट अछंती। मेल को पाखरे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल पाखरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जेमति हमर ह्यूमन केस रे देखो हमर मेल भी अछंती फीमेल भी बट बोथ मेल एंड फीमेल आर अंडर ह्यूमन ग्रुप और ह्यूमन कोन जो कैटेगरी। ओके सेमति तमर ए एनालिडा कैटेगरी नेरेस जो एग्जांपल दिया है जे तार मेल माने को पाखरे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल मानन को पाखरे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रहउची
that to separate. They both are separate organisms. Okay, has lateral appendages called parapodia for swimming. ठीक ଅଛି तो ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଏପଟେ ଅଛି ସେପଟେ ଅଛି ଏପଟେ ଅଛି ସେପଟେ ଅଛି ଏପଟେ ଅଛି ସେପଟେ ଅଛି ଏଟା ହଉଛି lateral ରହୁଛି କାହିଁକି ସେ ଇଜିଲି ପାଣି ଭିତରେ ୟା ହେଲ୍ପ ରେ ସ୍ୱିମ୍ କରିପାରିବେ ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ have nephridia for osmoregulation and excretion excretory material ର ରିଲିଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଡି ଭିତରେ କଣ ଅଛି ନା nephridia present ଅଛି ଠିକ ଅଛି ये ତାଙ୍କର excretory body system ରେ କହିପାରିବେ neural system consists of paired ganglia connected by lateral nerves to a double ventral nerve cord ganglia ମାନେ କଣ ରହୁଛି ନା ଯୋଉଠି ତମର bunch ହେଇକି ସବୁ nerve cord ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି bunch ହେଇକି nerve cord present ଥିବେ ତ ସେଇଟା pair ହି form ରେ ଅଛି ତାର ବଡିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରେ ସେଟା ଥିବ ଠିକ ଅଛି ସେଟା ତାଙ୍କର neural system ବୋଲେ ସେତିକି ହିଁ ତମେ ବୁଝିପାରିବ and reproduction is sexual example କଣ ରହୁଛି ନା एग्जांपल कौन रोचे ना एटी आर्दम रोएचा ठीक अछि देन लीच जोडा हम जोको बोली कहूचे एटा देखो ना तर व्हिच आर हर्माफ्रोडाइट त माने मोनोसियस त माने एठी गोटे देखो जो नेरेस रोचे सी होचे डायोसियस त माने तार मेल फीमेल सेपरेट अछंती बट एठी जे तमरला आर्दम और लीच एमन होतनी मोनोसियस माने सेही सेम ऑर्गेनिज्म रे बोथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अछि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अच्छी जी आग मैच्योर हो जाए और जहार सेल आग गैमेट प्रोड्यूसन करे से अनुसार कैटेगराइज करा जदि तुम मेल बॉडी सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आग मैच्योर है देन सेटा हला प्रोट एंड्रोस टाइप जो फर्टिलाइजेशन जो रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम अब द फीमेल आग है देन हला प्रोट गाइनस टाइप ओके तापर एई जे तमरो फाइलम एनिलिडा रहउची ताको की फर्स्ट प्रपोज करथले और तमरो की करथले जो कोन डिस्कवर करथले ना लामार्क ठीक अछि तो मेटामोरिक सेगमेंटेशन माने कोन ना वेल विजिबल बॉडी सेगमेंटेशन ठीक अछि एंड तमरो डाइजेस्टिव सिस्टम तार कोन रहउची ट्यूब विदिन ट्यूब ता माने तार स्पेसिफिक गोटे माउथ भी रहउची तार स्पेसिफिक गोटे एनस भी रहउची फॉर द रिलीज ऑफ वेस्ट मटेरियल ओके एंड तमरो लकण रेस्पिरेशन क्यूटानियस माने कोन तांको बॉडी ऊपर मॉइस्ट स्किन रहउची माने टे वेट टाइप रो स्किन रहउची सेही स्किन थ्रू रे से माने कोन करंती ना ऑक्सीजन इनहेल करि परंती और तमरो कोन जो बॉडी भीतर को एब्जॉर्ब करि परंती एकर लोकोमोटरी ऑर्गन मोस्टली कौन था देखो जे सीटा SITAE और पारापोडिया कहार कौन थिबो ठीक अछि एंड तमर रिप्रोडक्शन तो रहला तुम सेक्सुअल रहला तो जानि छ ठीक अछि तो नेक्स्ट बा आर्थ्रोपोडा एमिति गोटे तमर फाइलम जहां अंडर देखी अनदर बंच ऑफ क्लासेस आर देयर ये सातटा क्लास सब देखो कोन ना तमर अछि अनिकोफोरा एरिकनेडा क्रस्टासिया इंसेक्टा चिलोपोडा डिप्लोपोडा मेरोस्टोमाटा ओके ये सातटा क्लास तमर रहउची कहां अंडर रे ना आर्थ्रोपोडा फाइलम अंडर रे ए फाइलम तमर के डिस्कस करथिले बॉन सेबो ठीक अछि ना मन रखिथिबो मोस्टली एटा आसी न पारे बट खाली एग्जैक्ट ये पे एंड आर्थ्रोपोडा रो मीनिंग कोन रहउजे जॉइंट लेग्ड एनिमल्स जॉइंट लेग्ड एनिमल्स ओके लार्जेस्ट फाइलम काइन कहत ना ता अंडर रे सातटा क्लासेस ऑलरेडी प्रेजेंट अछि एंड समान ले कोन बाइलैटरली सिमेट्रिकल माने इक्वल लेफ्ट एंड राइट पार्टीशन तमे तांको बॉडी सिमेट्री थ्रू पाई परिबो ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस 3 germ layers are present segmented externally and organ system level of organization
बॉडी रे भी रिक्वायर्ड ऑर्गन सब ऑलरेडी फॉर्म होगी अच्छी और प्रेजेंट होगी अच्छी सेलोमेट माने प्रेजेंस ऑफ टू बॉडी कैविटी और टू सेलोम ओके बॉडी डिविजिबल इनटू जॉइंट सॉरी इनटू हेड thorax and abdomen हेड पार्ट रोचे देन गोटे नेक पार्ट और thorax रोचे देन तुम रोचे कोन abdomen पार्ट रोचे हला एंड हैज ए काइटिनियस एक्सोस्केलेटन तांकर एक्सोस्केलेटन माने तांकर जो बोन पार्ट रोचे जे तांको बॉडी को सपोर्ट दोचे इतरे कोन बेसी इंक्लूड हे अछि ना काइटिनस द एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट रोचे jointed appendages are present jointed appendages माने कोन एला तांकर लेग रो स्ट्रक्चर थे and most of the organisms जे कि arthropod phylum under रे आछले तांकर एई भला लेग्स रोचे most of them सेति पई तार ना arthropod आछे तामने joint लेग animals बोली कुहा जाउची respiration होची कोन ना gills थ्रू जा पाखर बुक gills थिबो से बुक gills रे जा पाखर lungs थिबो से lungs थ्रू जा पाखर proper tracheal system थिबो से tracheal system थ्रू excretion mostly Malpighian tubules और हुए कातलो green glands एटा मोस्टली इंसेक्ट मानकर ग्रीन ग्लैंड तम देखिबो ए सब जो सेलफिश प्रॉन ए सब मेरानिड देखा जाए तांकर कोन एक्सक्रीशन सेंसरी ऑर्गन कोन अछि ना एंटीना अछि एंड आईज अछि एंड ऑर्गन्स ऑफ बैलेंस ना स्टैटोसिस्ट एंटीना माने कोन हेड सपोज एठी अछि एठी आईज अछि गई मझिरो देखिबो कोन सेंसरी ऑर्गन तो सेटा तांकर एंटीना टाइप आईज रहछि Fertilization usually internal, development is indirect or direct, mostly oviparous. ठीक है example कौन रहेगा ना apis, bombix, laccifer, anopheles, culex, edis, locusta, limulus मान होचंदी example ठीक अछि तो example आमे तो देखि नॉन कोडाटा हमरो क्लासेस जे जिबार नाही ठीक अछि तो ये जो क्लासेस अच्छी अंडर तो खाली गोटे गोटे एग्जांपल कहि दोची अनिकोफोरा रे अछि कि ना पेरिपेटस देन तमर आरिकनेडा रे अछि स्पाइडर मोस्टली इंसेक्ट तम पाइबो एठी मेरिस्टोमाटा रे अछि तमर कि किंग क्रैब्स देन तमर डिप्लोपोडा रे अछि कि ना मिलीपॉड्स देन तमर चिलोपोडा रे अछि कि सेंटीपॉड्स then insect रे अछि कि all type of जो insect cockroach ही नहीं करो हला आ क्रस्टासिया मोस्ट इंपोर्टेंट क्रस्टासिया रे अछि कि हमरो प्रॉन्स चिंगुडी हम कहू ठीक अछि मिलीपॉड और सेंटीपॉड कोइ सब ने तांकर लेग स्ट्रक्चर नहीं कुहा होची एथिरे देखो एक दिया आइची मिलीपॉड रो लेग केते मात्रा काउंट भी करि परबनी ठीक अछि त से माने सेही टाइप रो ऑर्गेनिज्म आसी गले मिलीपॉड अंडर रे पर जो माने को देखो 100 टा थिबो लेग से माने आसी गले कहा अंडर ना सेंटीपॉड अंडर रे ठीक अछि तो मोस्टली सब प्रकार रहले कि इंसेक्ट टाइप रो ऑर्गेनिज्म आसले हमर कहा अंडर रे हमर आर्थ्रोपोडा अंडर रे आसी नेक्स्ट आसला है मॉल्युस्का कांड्रास्टोम के स्नेल कैसे ऑक्टोपस मोस्टली है ठीक है यार मॉल्युस्का रा टर्मिनोलॉजी के देखले टर्म्ड बाय एरिस्टोटल टर्मिनेशन करथि कि एरिस्टोटल सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमलिया तो फर्स्ट ला कि तमर आर्थ्रोपोडा देन आसला तमर एनिमलिया तो जो कोन मॉल्युस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक आइदर लैंड रे थिबे और तमर कोन वाटर भीतर थिबे आर बायलैटरल सिमेट्रिकल तमने बॉडी को तमे इक्वल हाफ लेफ्ट एंड राइट हाफ रे सेपरेट करि परिबा ट्रिप्लोब्लास्ट 3 germ layers are present to produce more cells organ system level of organization cellomet माने true body cavity is present body divisible into head muscular port and visceral hump ठीक अछि हेड माने ताकर गोटे एटी हेड स्ट्रक्चर गोटे थिबो देखो एंटीना टाइप अछि मस्कुलर कोन रहउछि फुट ए तळ पार्ट जेटा देउछि एटा मस्कुलर पार्ट विसरल हम्प माने जो हार्ड पार्ट अछि ठीक अछि and is covered by calcareous cell and is unsegmented
कैल्कारियस माने कौन ना जोटा कि कैल्शियम कार्बोनेट रे बनी जिनसा कैल्कारियस सेल और हार्ड पार्टा बॉडी रो एंड इज अनसेगमेंटेड से कौन सेगमेंटेड सेगमेंटेशन डिवीजन नहीं। मेंटल मेंटल कौन ना गोटे सॉफ्ट एंड स्पंजी लेयर ऑफ स्किन ये जो स्किन रोचे से ऊपर तमर कौन मेंटल लेयर गोटे रोचे। मेंटल कैविटी माने तुम ये जो विसरल हम्प तुम रहला और तुम रहला कौन ना मेंटल ये मेंटल भीतर जो गैप था भीतर जो तुम स्पेस है कहूँ और जो कौन डार्क कैविटी टाइप रहा मेंटल कैविटी ये मेंटल जो ही जनरेट हो चुकी है और मेंटल को सपोर्ट देवा प्रोटेक्ट रखा जनरेट होची हार्ड कवरिंग ओके। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय फेदर लाइक गिल्स इन मेंटल कैविटी ये मेंटल कैविटी भितर जो अच्छी तुम हार्ड कवरिंग तले आ बॉडी जो गैप अच्छे ता मझे तुम कौन गिल्स लाइक स्ट्रक्चर अच्छे मैंने फेदर भाया गिल थी जहाँ तुम कि से ऑक्सीजन इनहेल आ तुम कार्बन डाइऑक्साइड एक्जिट कर माने रेस्पिरेशन प्रोसेस कंटिन्यू कर परिबो। हेड हैज सेंसरी टेंटाकल्स ये देखो जे टेंटाकल्स संकर रहउची सेंसरी टेंटाकल्स माने कोन से माने ता थ्रू रे सब फील कर परिबे जानी परिबे ठीक अछि तंग सेंसेशन से थ्रू हे परिबे। रेडुला इज ग्रास्पिंग रेडुला तंग बॉडी थे ना कोन ग्रास्पिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग इन माउथ ठीक अछि तंग बॉडी एंटी गोटे पार्ट थे जथि कि से फूड को करबे कैप्चर कर नेबे सेटा होची कोन कहत रेडुला जातु से कैप्चर हला पर से मन तक माउथ को लेके फीड करेबे और खाई परिबे तंग न्यूट्रिशन पाई। आर ओविपेरस डायोसियस एंड हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ओके हमें बहुत सारा डायोसियस मोनोसिस से देख देले इनडायरेक्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट ता कोन इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कोन ओविपेरस डिपेरस कोन देखबा तो एग्जांपल टा भी देखिनियो पिला हला तबेडा जी कोन पिंकटाडा ऑक्टोपस सेपिया लोलिगो एप्लिसिया डेंटालियम कैटोप्लेरा ठीक है ये सब एग्जांपल ताको मन रखिबो मे बी तुमको तो डायरेक्ट एग्जांपल पचारिबनी जिनस डिफरेंट डिफरेंट फाइलम रो किसी ऑर्गेनिज्म मन नहीं थो और पचार देबो ये को फाइलम को बिलोंग करे एमती आसी जाई पाए ठीक अछि। तो ये भी देखो गोटे इंपोर्टेंट जिनस ओविपेरस माने एग लेइंग ऑर्गेनिज्म विविपेरस माने न्यू ऑर्गेनिज्म जनरेट होची तो ये एग और लार्वा जो फॉर्म रे फॉर्मिंग डेवलप होची ताको कहा होची इनडायरेक्ट डेवलपमेंट विविपेरस माने जो डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म को जन्म करते ताको कहते हमें कौन डायरेक्ट डेवलपमेंट ठीक अच्छे आ इंटरनल फर्टिलाइजेशन माने कौन ना फ्यूजन of both the gametes inside the female body. External fertilization माने fusion of gametes outside the female body ठीक अछि। नेक्स्ट आसीबा हमर की एकिनोडर्माटा फाइलम एकिनोडर्माटा ठीक अछि एकिनोडर्माटा रो ना रे ही अछि कि से गोटे तमरा हार्ड सरफेस और हार्ड में कोन बॉडी स्ट्रक्चर तार अछि एथरे स्पाइन माने कंटा 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 फोड़ी फोड़ी हला वाला सेही वाला तार स्ट्रक्चर रहउछि ठीक अछि सेति पे ताको हमें कोन कहि परिबो ना स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स है बहुत कॉमन है तुम जानी परिबा स्टारफिश ओके। तो यही फाइलम टा ऊपर के डिस्कस करथिले जैकब क्ले ठीक अछि से नेम देथिले ओके एंड की इंट्रोड्यूस करथिले ल्यूकट ये इज नेम्ड बाय Jacob Klein and introduced by Leucott. A spiny bodied organism with endoskeleton, meaning inner hard part or inner skeletal structure, is of calcareous ossicles. ठीक है
इतर जहाँ स्ट्रक्चर अच्छे कैल्शियम कार्बोनेट रे प्रिपेयर स्केलेटल पार्ट आर एक्सक्लूसिवली मराइन पानी भितर ही रहिबे ठीक अच्छे रेडियली मेराइन माने मेराइन वाटर भितर रहिबे रेडियली सिमेट्रिकल इन एडल्ट बट बाइलेटरली एसिमेट्रिकल इन लार्वल स्टेज जेतबेले ସେମାନେ early development stage रे थांती ସେମାନଙ୍କୁ equal left ଆଉ right रे body symmetry रे divide करी हेबो जेतबेले ସେମାନେ adult stage को जांती ସେମାନଙ୍କର body ର middle axis देखि जे कोनोसे direction तांको divide कले भी हमें equal half पाई परिबा ठीक अछि तामाने in adult radially symmetrical but in larval stage bilaterally symmetrical triploblastic presence of 3 germ layers celomate presence of 2 body cavity digestive system complete माने कोन ट्यूब तार प्रॉपर माउथ भी अछि proper anus भी अछि to release out the excreta okay mouth ventral okay lower part रहउछि सपोज एरा स्ट्रक्चर एंत रहउछि लोअर पार्ट एटा रहला तमरो माउथ एंड तमरो डोर्सल पार्ट अपर पार्ट रे तमरो कोन एनस ठीक अछि तो माउथ वेंट्रल एंड जो एनस डोर्सल डोर्सल हमर जति देखिया बॉडी हमर बैक साइड ता होछि डोर्सल पार्ट हमर फ्रंट साइड ता होछि वेंट्रल पार्ट तो सेही सब तांकर भी जानि पड़िबे फूड गैदरिंग रेस्पिरेशन लोकोमोशन कैरिड आउट बाय वाटर वैस्कुलर सिस्टम तांका बॉडी रे गोटे लंग सिस्टम रहतो किछि कैविटेबल स्ट्रक्चर रहतो गोटे जगह इनपुट गोटे जगह आउटपुट एवला रहउछि सेतने कोन होछि ना फूड गैदरिंग माने फूड कलेक्ट हेकि रहउछि तमरो कोन ऑक्सीजन भी कहले ठीक रहउछि फॉर रेस्पिरेशन लोकोमोशन माने कोन बॉडी मूव भी करछि तार सपोर्ट रे कैरिड बाय वाटर वैस्कुलर सिस्टम से सिस्टम ना कोन वाटर वैस्कुलर सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट तार कुछ पर्टिकुलर सिस्टम नहीं एक्सक्रीशन करबा पे ठीक अछि बट तमर रिलीज हो जाए ना कुछ ना तो एक्सक्रीटा रिलीज हो किंतु डेफिनेटली किछ स्ट्रक्चर नहीं तो ऑर्गन सिस्टम को हम कहउछु रेस्पिरेटरी सिस्टम सेक्रेटरी सिस्टम सेंटर रेस्पिरेटरी नहीं बस होउछि तो हेडा वेस्ट हो और दादा बॉडी दरकार न होछि से एनासेटा रिलीज हो जाए रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल sexes are separate तमने एटा होछि अगेन कोन डायोसिस हैला एंड तुमरे कोन मेल फीमेल आर सेपरेटेड फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल मु कहइतली माने फीमेल बॉडी रो आउटसाइड रे गैमेट्स मानकर फ्यूजन हबो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट माने कोन होछि ना मानकर लार्वा फॉर्म रहउछि एग या लार्वा फॉर्म कहइतली तांकर फ्री स्विमिंग लार्वा रहउछि जो माने कि जेबी तमरे कोन करते डेवलप हेकि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म रे सब कन्वर्ट होछन एग्जांपल देखना एस्टेरियाज ओके कोकोमारिया एंटीडोन एकिनस ओफ्यूरिया ठीक अछि ए सब होछन तमरा कोन एग्जांपल जदि मु ताको एबे नॉर्मल ये रे कहिबी अछंती सी अर्चिन सी कुकम्बर स्टारफिश ए मानस आसीजबे एकिनोडर्माटा अंडर देन लास्ट हमर आस नॉन कॉर्डेट्स अंडर रे ये तमरा हेमिकॉर्डाटा फास्ट तो ये कहा अंडर थिला कॉर्डेट्स अंडर थिला सब फाइल कॉर्डेट रो सब फाइल हिसाब रे थिला हला तापरे एबे कोई रिसर्च साइड तंकर स्टडी हिसाब से आसीला कहा अंडर ना तम नॉर्मल नॉन कॉर्डेट्स अंडर कारण ता समझ किछि डेफिनाइट सपोर्ट सिस्टम बॉडी रे नाही जोटा के ताको सपोर्ट हमने आनी परिबो कॉर्डेट्स अंडर रे रिप्रेजेंट स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक स्ट्रक्चर ठीक अछि एंड समानकर बॉडी कोन ना ऑर्गन सिस्टम होछि कोन organ level body structure bilateral symmetrical man dita equal left and right रे convert हे परिबो triploblastic 3 layers germ layers present cellometric 2 body cavity and तमरो कोन लेके प्रीवियसली सब फाइलम कोलाटा थिला दबर जाने कोन cellomet 2 body cellum present अछि then circulation हला ओपन टाइप ओके एंड तमरे एठी जो अछि गोटे देखो प्रोबोसिस ग्लैंड थिबो ठीक अछि या थ्रू तमरो कोन होछि एक्सक्रीशन होछि ओके रिप्रोडक्शन टाइप रे कोन डायोसियस माने मेल फीमेल सेपरेट अछंती एंड फर्टिलाइजेशन तमरो हला एक्सटर्नल ठीक अछि तापर आउर अछि कोन डेवलपमेंट होछ तमरो इनडायरेक्ट
रेस्पिरेशन रेट तुम लिखा है देखो बाय गिल्स ठीक अच्छे बॉडी होची सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड तुम कोलार अच्छे ट्रंक अच्छे ये पार्ट हो तुम कौन प्रोबोसिस ये है कोलार बाकी तो कर तुम कौन ट्रंक पार्ट ठीक अच्छे तो ये है कहार ना हेमी कॉर्डाटा अंडर आसले माने कोड देखा जाई परिबे तो तुम लैंड रे थिबे तब तुमको वाटर एयर अंडरग्राउंड कोठी भी से माने रही पारिबे ठीक अच्छे एक्सोजिनस स्ट्रक्चर तुम कौन बॉडी सेमती किसी हार्ड पार्ट नहीं जो वापस आसीगला कारण नॉन कॉर्डेट्स अंडर ओके तो ये आस आमर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन Which of the following is not a basis for classifying animals into different phyla? ना labels of body organization अच्छी body symmetry भी अच्छी presence or absence of notochord एटा भी अच्छी mode of reproduction एटा नहीं तो आंसर हम बॉडी नोटोकॉर्ड हम कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट्स डिसाइड करा होछ ना नहीं से कॉर्डेट्स भीतर तमरो अछंती से कोन डिफरेंट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन रोचे नॉन कॉर्डेट भीतर डिफरेंट टाइप रो रोचे animals which exhibit radial symmetry typically belong to what annelida कुह तुमर बायलैटरल होचे आर्थ्रोपोडा तुमर बायलैटरल रोचे प्लैटिहेल्मिन्थेस भी हमर कि रोचे ना तुमर बायलैटरल ही रोचे तो ओनली निडारिया माने तुमर माने पड़थो हाइड्रा एग्जांपल तो से माने कोन ना रेडियल सिमेट्री तबे बॉडी सिमेट्री प्रेजेंट अछि which of the following groups is characterized by pseudocelum माने फेक बॉडी कैविटी अछि ना सेटा होचे नेमाटोडा माने कोन ना टेनोफोर ऑर्गेनिज्म मानकर टेनोफोर फाइलम अंडर जो ऑर्गेनिज्म अछंती समानक बॉडी रे एक्चुअल रेट कैविटी नाही कि बिल्कुल एमते स्ट्रक्चर नाही जहा को हमें कहबा कि कैविटी प्रेजेंट अछि जोटा अछि किछि कैविटी टाइप रो स्ट्रक्चर दोउछि एक्चुअली सेटा कैविटी नाही एटा को हमें फेक कैविटी हिसाब रे कंसीडर करि परिबा सेना नेमाटोड्स then triploblastic animals have no germ layer both three germ layers obviously tree अछि तो आंसर अब हमर बी in which group of animals is the notochord present at least in some stage of life annelida notochord नाही थिले तो से कॉर्डेट्स अंडर आस्तांता आर्थ्रोपोडा सेम देन कॉर्डाटा जहार कि notochord थिबा कथा ठीक अछि जोति पे कि हमें कॉर्डेट्स कहूछु काना तक तार किछटा बैकबोन रहउछि मॉलस्का अगेन अंडर नॉन कॉर्डेट्स तो कॉर्डाटार नोटोकॉर्ड अछि पुणी कहूछि कोन ना इज द नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एट लीस्ट इन सम स्टेज ऑफ लाइफ ता माने एमान को सब इयरली डेवलपमेंट स्टेज रे तकर रोतला कोन ना नोटोकॉर्ड देन तापर तो एडल्ट स्टेज हेला को से एडल्ट माने आ टिके जो कोन लेट डेवलपमेंट स्टेज से बैकबोन को हमरा आसी जे कन्वर्ट हो जाय ठीक अछि segmentation in the vertebral canal pouch segmentation is visible in which of the following phylum ये phylum रो plural अछि phyla mollusca annelida echinodermata porifera mollusca हमरा snail सब आसले एतले नो segmented हम भी जस्ट रिसेंट पढिले annelida अंडर आदम आछे तार बॉडी प्रॉपर्ली क्लियर विजिबल देखाउ तार segmentation तो आंसर हम कोन बी echinodermata रे भी नाही porifera रे भी तमरो बिल्कुल भी सेगमेंट नाही अंतर सेफ ही कुछ डिफिनेट नहीं then diploblastic organisms have diploblastic माने डाई एठी अछि तो दीटा थिबो जोटी दीटा अछि माने हेटी मेसोडर्म एब्सेंट अछि तर की प्रेजेंट अछि ना एक्टोडर्म आउ एंडोडर्म का आंसर इज बी which characteristic is found in all animals of the phylum chordata को कैरेक्टर सबु phylum chordata अंडर रे आछि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नाही कारण हमर कॉर्डेट्स मानकर सर्कुलेटरी सिस्टम एमती अछि कि ब्लड वेसल्स आर्टरी जो कैपिलरीज ए थ्रू रे ही कैरी आउट होउची और ट्रैवल करूची एक्सोस्केलेटन नाही आउटर पार्ट रे हार्ड पार्ट हमर नाही जॉइंटेड अपेंडेक्सेस सेटा भी नाही कोनोसी कॉर्डेट्स मानकर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड डॉर्सल साइड रे हमर को नर्व कॉर्ड प्रेजेंट अछि एटा ही हम आंसर ठीक अछि which is the first phylum to show bilateral symmetry and triploblastic organization ठीक अछि जे हम पोरिफेरा को आसुचे तो तारो माने कोन जो सिमेट्री बॉडी सिमेट्री किछि नाही तो एरा आंसर हबो ही नहीं डायरिया को जदी हम आसे जहा के से हम कहले हाइड्रा एमन सब अछि जेलीफिश अछंती
सेठी तमरो कोन ना बाइलेटरल हबन, सेठी हबो कोन ना रेडियल सिमेट्री हबो। ओके, ये भी आंसर हबन। टेनोफोरा नेमाटोड एमानंकर भी तमरो हबो नाही। तो आंसर हबो कि ना प्लैटीहेलमिन्थेस, जहार कि तमरो बाइलेटरल सिमेट्री अछि, ट्रिप्लोब्लास्टिक तो जर्म लेयर अछि। तो आंसर हबो सी। Animals that can be cut into identical halves in only one plane are said to have what? Identical half माने सेपरेट करा होची, माने कोन कहा होची ना बाइलेटरल सिमेट्री। एपड़ तो पार्टटा मझे कट करा हला लेफ्ट राइट, कोन आसला ना सेमान का आइडेंटिकल सिमेट्री हेई पारची। ठीक अछि, जे रेडियल सिमेट्री हेई थांता देन एमटी लिखा थांता कि मिडिल पार्ट दे कि तमरो जे कोन से डायरेक्शन जदी तमरो सेपरेट करा हबो देन सेमाने इक्वली हाफ रे कन्वर्ट हेबे। Which of the following animals has a closed circulatory system? Cockroach arthropoda अंडर रे अछि, तार नाही। Prawn arthropoda अंडर रे नाही। Spider भी arthropoda अंडर रे नाही। ओनली आदम जे annelida अंडर रे अछि, हम एबे जस्ट पढि के आसले तार क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम अछि। ता बॉडी होची ऑर्गन लेवल ऑर्गन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, तार प्रॉपर सब सर्कुलेटरी सिस्टम रहिछि। तो ताको बॉडी रे बॉडी सर्कुलेशन ता तार वेन्स कैपिलरी ब्लड फ्लो जो कोन ब्लड स्ट्रीम ए थ्रू रे कि होची। तो सेमाने क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को पोजिस करंती। In an open circulatory system, blood is what? Confined to vessels? 9. Present only in the heart? No. Poured into body cavities? Yes. Absent altogether? Poured में मु कहते ना पूरा डायरेक्ट ब्लड बाथ से माने नोचो तार ऑर्गन माने तो बॉडी कैविटी ता है ब्लड जो भी गैप थिबो जो भी पार्ट फांका तो से ब्लड ता तब ऑटोमेटिकली फ्लो होई कि पड़ेबो। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। Which phylum mostly exhibits an open circulatory system? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है जे कि तुमरा कोन करछ माने पूरा ब्लड बाकी होचे। आनेलेटा एबे ही हमें आउटकम बस देखले तो सेटा हबनी। देन असला कि ना हमर आर्थ्रोपोडा हबो। कोडाटा रो भी क्लोज सिस्टम अछि, माने ब्लड वेसल्स और तुमरो कोन आर्टरी ए सब थ्रू होची। मॉल्यूस्का मानकर भी सेया ना ओनली सेफालोपोड्स। ओके, ताको छाड़ देले बाकी सब मॉल्यूस्का ऑर्गेनिज्म मानकर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट अछि। तो आंसर हबो कोन ना बी आर्थ्रोपोडा। Which of these has a closed circulatory system like vertebrates? Vertebrates माने कोन ना जो माने को बॉडी रे नोटोकॉर्ड बदल रे वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट अछि, जेटा कि मागु कॉर्डेट्स रे पढिबा। से माने आसीबे कहा अंडर रे ना वर्टिब्रेट्स अंडर रे। तांकर सर्कुलेटरी सिस्टम होची ना कोन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तांको भितर कहार सेटा अछि स्नेल तमर आसीबन हबनी, मॉलस्क अंडर रे, ग्रासहॉपर तो आर्थ्रोपोडा अंडर रे से भी आसीबनी, स्कॉर्पियन भी तमर आर्थ्रोपोडा अंडर से भी आसीबे। तो बाकी लगे स्क्विड। तो ये है आंसर। In which type of digestion is there only one opening for ingestion and ejection? Complete ले तमरो पर्टिकुलर गोटे माउथ भी अछि, गोटे पर्टिकुलर एनस रहउछि। तो सेटा हबनी। एब्जॉर्प्टिव टाइप ले सेटा तमरो बॉडी स्किन थ्रू और किछि ग्रास्पिंग मटेरियल थ्रू एब्जॉर्ब हे परिबो। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हेले भी तो तमरो कोन कंप्लीट होउनी, किछि एक्सक्रीशन ए सब हे पारुनी। इंजेक्शन होउन तो एक्सक्रीशन कोन हबो खाली एब्जॉर्ब होबो जे न्यूट्रिएंट्स। तो आंसर हबो कोन इनकम्प्लीट डाइजेशन, जोतरे कि तारो तीटा बॉडी पार्ट नाही जोतरे कि एंट्री करबो और तार एक्सक्रीटा रिलीज हबो, और जो बटे एंट्री हबो सेही बटे ही तारो एक्सक्रीटा रिलीज हबो। ठीक अछि। A complete digestive system is characterized by what? Separate mouth and anus. ये हबो आंसर। भी जस्ट पूर्व क्वेश्चन हम देखले ला प्रेजेंस ऑफ ओनली ओरल कैविटी, नो प्रेजेंस ऑफ एनस बट नो माउथ, नो absence of digestive enzymes, no digestion तो होउची, digestive enzyme तो रहिबा दरकार। आंसर हबो सेपरेट माउथ एंड एनस अछि, माने गोटे पटे फूड इंजेस्ट होउची आ गोटे पटे फूड एक्सक्रीट होउची, then only it can be said as the complete digestive system. Which of the following has a complete digestive system? Hydra नाही, हाइड्रा कांडा जे अंडर असला प्लेटफॉर्म भी हबनी। आदम जहार तुमरा एंड अंडर आउची तार हबो टेपफॉर्म भी हबनी। जो आस्केलिटस प्लैटिहेलमिन्थेस सेमान पर नाही ओनली अछि एमलेड ऑर्गेनिज्म दैट इज आर्थवर्म।
Incomplete digestive system is found in what? Nematode जो टेनाफोर है तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी मॉल्यूस्का एमानकर भी कौन अच्छी कंप्लीट अच्छी एकिनोडर्माटा जोटा से आम एबे जस्ट पढ़ले ता पूर्व क्लास ये जो पूर्व स्लाइड रे तांकर भी अच्छी तो नाही कहार ना ओनली नेडारिया बा हमर कोन सिलेंटेड ऑर्गेनिज्म मानकर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट अच्छे माने बहुत माउथ और प्रेजेंट नाही Sponges exhibit which level of body organization? Sponges मानना होते हैं कहाँ अंडर रे आसले ना पोरिफेरा फाइलम अंडर रे आसले आंका बॉडी सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रे अछि एंड बट मल्टीपल सेल अछंती किंतु से सेल माने क्लस्टर है कि टिश्यू कन्वर्ट करू नाहंती तो आसले कहार आंसर हबो ना सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन which of the following shows tissue level of organization हाथ में तो ऑर्गन्स अच्छी हाइड्रा नंबर ऑर्गन नाही आस्पारी सला लीसला में कंप्लीट ऑर्गन अच्छी तो बाकी मतलब कि नेडारिया अंडर रहतिबा और सिलेंडर अंडर रहतिबा हाइड्रा organ system level of organization is seen in nedaria no hydra रे भी देखले नाही पैटियल में तो इसरे भी नाही पोरिफेरा रे भी नाही तो सेलुलर लेवल या टिश्यू लेवल या नेडारिया टा वो कोन इंडस्ट्रियल लेवल तो आंसर आसला कि ना सी आर्थ्रोपोडा मानकर कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम सब प्रेजेंट अछि मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा आर सॉरी फाइलम पोरिफेरा तमाने कोन तंगर बॉडी रे सेल्स अछि ठीक अछि बट समानंगर सिंगल सेल नाही काहे ना तंकर से सेल माने असेंबल हेगी डाइजेशन एब्जॉर्प्शन फूड को जो कलेक्शन ए सब करूछंती अलग अलग प्रोसीजर होउची तमाने तंगर मल्टीपल सेल्स अछि सेति पई समाने कलेक्टिवली फॉर्म करछंती ना सब प्रकार प्रोसेस को कैरी आउट करि परछंती सो मल्टी सेलर माने ए और बी भितर गोटे आंसर हबो ला ऑटोट्रोफी समानकर किछि ऑटोट्रोफिक वाला पिगमेंट नाही कि तंगर किछि जिंस नाही तो ସେମାନେ ଆଟ୍ରୋଫି ହେଇପାରିବେନି आंसर हबो मल्टी सेलर एंड हेटेरोट्रोफिक निज फूड पाई और निज डाइजेशन पाई से अदर सोर्स ऊपर डिपेंड करନ୍ତି which of the following statement is true regarding porifera they have a digestive system they possess tissues and organs they have a water transport or canal system they have bilateral symmetry first होची porifera रो किछि सिमेट्री नाही ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम भी तंकर नाही कारण से ऑर्गन लेवल पे तंकर बॉडी लेवल नुहे तो टिश्यू और ऑर्गन से सब नहीं कारण तंकर हम देखिन कोन से सेल लेवल रे अछि तंकर कोन प्रेजेंट अछि ना दे हैव द वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम तो सी विल बी आंसर द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस इज सपोर्टेड बाय व्हाट only muscles only bones spicules or spongial fibers chitinous plate माने जे स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जियल फाइबर तंगर मेसोग्लिया भितर थाए एक्सोस्केलेटन से गोडा ही तमर कोन तंगर बॉडी को स्ट्रांग कर रखे स्ट्रेंथ दोची ओके तंगर एक्सोस्केलेटन पार्ट तले के रहला spicules or spongial fibers next the which of the following is a marine sponge with glass like spicules marine sponge के अछि वाला स्पॉन्जिला यूप्लिक्टला साइफन लिकोसेलेनिया ना तो आंसर हबो कोन ना यूप्लिक्टला ठीक स्पॉन्जिला साइफन एटा सब तमर आसी होची कोन which of the following is a marine sponge हां marine sponge एटा आसी एटा तमर marine नहंती digestion in porifera is what extracellular no intracellular ही परियो कान तंगर सेल थ्रू ही सब फंक्शन कैरी आउट होची both extra and intracellular not possible absent run हुए कारण से फूड इनटेक करूछन तमन डाइजेशन होउची what is the symmetry of porifera radial bilateral only radial symmetry only radial मतलब पोरिफेरा रो कोनोसी बॉडी सिमेट्री मोस्टली नहीं यदि बाय चांस कोटे होती तले रेडियल और असिमेट्रिकल रहउची आंसर ओके पोरिफेरा shows which type of reproduction asexual sexual both sexual and asexual तो आंसर both sexual and asexual तंकर बॉडी स्ट्रक्चर हिसाब रे मानकर कोन बोथ सेक्सुअल और asexual reproduction हे पाई what is the level of organization in porifera
cellular level of organization. Which of these following example is an example of calcareous sponge? ल्यूकोसेलेनिया रे बॉडी रे हमर कोन तार एक्सोस्केलेटन रे कोन अछि ना तुमरो कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट अछि जे कि बॉडी को स्ट्रेंथ ता थ्रू ही प्रोवाइड करे. In porifera, the central cavity into which water flows is called as spongiosum. जो बॉडी कैविटी ता भीतर अछि ताको कहै छै spongiosum. Which of the following features is characteristics of all porifera? जदि मते खाली कहता बट कोन अछि एथे spongiosum नथांता त आंसर में गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी हेतांता. ठीक अछि. बट जेहेतु spongiosum अछि एंड स्पॉन्ज रो बॉडी कैविटी को spongiosum ही कुहा जाउछि तो हमें प्रॉपर जो एक्यूरेट आंसर एटा हबो. Which of the following features is characteristics of all porifera? Radial symmetry cellular body, pores and canal system for water circulation, and bilateral symmetry with segmentation, presence and autograph. No non-chordate segmentation present नहीं कि body symmetry asymmetrical, radial symmetry नहीं कि तुम्हारा body cavity फ्लोसीलम रे जाउनी तो आंसर हो कोन ना बहुत सारा पोर्स अछि ता बॉडी का आउटर सरफेस जोति पे ता नाम को पोरिफेरा दिया आइছে एंड तुमरो कैनल सिस्टम फॉर वाटर सर्कुलेशन जेटा कि हम एठी पढिले. ठीक अछि. तो आंसर हो पोर्स एंड कैनल सिस्टम फॉर वाटर सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इनसाइड पोरिफेरा ऑर्गेनिज्म. Which of the following cells in sponges help in digestion and circulation of nutrients? Pinacocyte, porocyte, choanocyte, amoebocyte. तार बॉडी रो मेजोक्लिया भितर सब इनडेफिनाइट शेप रो सेल्स माने अछंती जाय प्रॉपर सेल नहीं अमोeba लाइक स्ट्रक्चर तो सेमने कहा जाय कोन ना amoebocytes. Choanocytes are also known as what? Ciliated epithelial cells? No. Flame cells या अंडर ऐसे ही नहीं choanocytes कोन परिसर अंडर interstitial cells कोन नहीं. आंसर हो कोन ना बी collar cells. इनके था ना. Okay. What type of skeleton do members of phylum Porifera possesses? Cartilaginous skeleton, no bony skeleton, no spicular spongin fiber present अछि, no skeleton at all. The answer was C. Which of the following is a freshwater sponge? Spongilla, Reflectula, Siphon, Leucosolemia. Answer was sponge. Spongilla. Which of the following is a freshwater sponge? Freshwater sponge की रोज तुम्हारे Spongilla is a food product की same दिन से खाइतला. The canal system in siphon is siphon type canal system. Body. तारा body जनते सेम canal system रहेगा. Reproduction in porifera can occur through both sexual and asexual means or modes. तो पढ़ते Which of the following is a characteristic feature of coelentrates? ये coelentrates माने क्या आसला ना हमरो nematodes माने आसले. ओके तो कौन अछि तार क्राइटेरिया? नोटोकॉड नहीं, नेक्रोडिया भी नहीं. तो आंसर कौन होबो? निडोब्लास्ट अछि. तार मतलब निडल टाइप रो स्ट्रक्चर थिला ना. ये टाइप रो सेल से जेतरे से फूड को कैप्चर करथिला. ठीक अछि. एंड तुमरो कोन डिफेंस तक बॉडी को प्रोटेक्ट करिया पी आ फूड कैप्चर करिया पे यूज करा दे ता अगर बॉडी रे निडल लाइक स्ट्रक्चर अछि तो ताको कहै छै निडोब्लास्ट. एटा कार रहिला जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलेंट्रेट मनकर सेति पई फाइलम को हमें आ कोन कहै छै ना निडारी. Okay, the body cavity present in coelenterate is true cellum तो नहीं, pseudocells भी नहीं, arcelement भी नहीं है. तो आंसर होगा gastrovascular cavity. ता बॉडी भीतर जो पार्ट अछि उनके स्ट्रक्चर थो ना. तो तुमरो कोन निडोब्लास्ट थिबो. ए कैविटी को आज कोन gastrovascular cavity. What is the level of organization in coelenterate? लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ने इतने मल्टीपल सेल्स माने अरेंज है कि टिश्यू को फॉर्म करचंदी एंड टिश्यू लेवल को आसंदी एंड टिश्यू लेवल रे हमरा ऑर्गन सिस्टम लेवल को जाई पारू नाही. तो तांका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बॉडी होला बी. The symmetry in coelenterate is
bilateral no, asymmetrical no, radial yes, biradial no. तो सिलेंट्रेट किए उसको हाइड्रा। तो हाइड्रा को जो भी डायरेक्शन में मझी पार्ट दे क्रॉस करे से सेम इक्वल हाफ रे कन्वर्ट हो तो आंसर विल बी रेडियल। द सिलेंट्रेट बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट एमे कोन ना तमरो बाय जो कोन डिप्लोब्लास्टी माने दुईटा तमरो होती कोन जर्म लेयर दुईटा जर्म लेयर माने ही मेसोडर्म एब्सेंट तो अछि कि ना एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म आंसर हो ए। Which of the following shows polymorphism? Polymorphism माने कौन रहउचे हाइड्रा ओबेलिया प्लानारिया अदोरे लगन ascaris ହେଲା polymorphism माने तुम्हारा मल्टीपल फॉर्म रे एक सिलेंट्रेट अंडर तुम दीटा फॉर्म रहउचे गोटे होचे पॉलिप और गोटे होचे मेडुसा ठीक अछि तो तांका भितर ओनली ओबेलिया टाइप ऑर्गेनिज्म करा बोथ फॉर्म अछि ହେଲା पॉलिप टाइप रे भी अछि मेडुसा टाइप रे अछि और ସେମାନେ ସବୁ କଣ डिफरेंट से गोटे कॉलोनी भितर ଥିବା डिफरेंट फंक्शन को कैरी आउट करते। Which of the following is found only in polyform? Polyform रे खाली किए अछि त तमरा हाइड्रा रहइछि इंटेंट स्ट्रक्चर हे रहउछि ना तो ये तमरा पॉलीफॉर्म और तो मेडुसा फॉर्म हेले कोन स्ट्रक्चर रहबो तो आंसर हेबो कोन ना हाइड्रा। Which of the following is a free swimming medusa form? Aurelia जेलीफिश टाइप का स्ट्रक्चर तार अछि Aurelia medusa पाउ छत्ता थिबो तारे तमर से टेंटाकल्स वाला स्ट्रक्चर आछो। Which of these elements is cylindrids is colonial and shows polymorphism? कि तमर कोन colonial अछि and polymorphism भी देखा होतो Aurelia में हाइड्रा में सी एनिमल नहीं तो तमर के फाइसलिया ओके Nidoblasts are absent in Spongilla काहेकि ना हाइड्रा फाइसलिया और तुम ऑरेलिया ए तीनटा का आछंती कहां अंडर ना सिलेंट्रेट्स अंडर रे ओनली स्पॉन्जिला तुम कहां अंडर रे ना पोरीफेरा अंडर रे तो निडोब्लास्ट कहार अछि ना सिलेंट्रेट्स मानकर निडारिया मानकर अछि तो आंसर होगा स्पॉन्जिला। Coral reefs are formed by what? Free swimming medusa, colonial polyps forms of cylindrids, solitary polyps forms of cylindrids, freshly cylindrids, surface water cylindrids. हाँ तो आंसर हम कौन तुम बी कहीं से मैंने रिलीज करते कौन ना कैल्शियम कार्बोनेट जो की फॉर्म हुई कौन ना कोरल रीफ। Okay, which of the following is correctly matched with its habitat? Obelia, freshwater, hydra, marine, ठीक अच्छे Aurelia marine, Spongilla marine. Only correctly match जी अच्छे सेरा तमर की ना Aurelia काना Obelia होची मोर कौन marine रे रहइबो hydra उस तमरा कटी freshwater रहइबो Spongilla भी तमरा कौन ना freshwater रहइबो only Aurelia जेकिन marine नट ठीक अच्छे। The sexual reproductive structure in hydra is what? Body. स्ट्रक्चर दी एमती रहिला गोटे बर्ड जनरेट हबो गोटे प्रॉपर टाइम पर से बर्डटा सेपरेट जो पेरेंट बॉडी रो एंड निजे गोटे आउ गोटे हाइड्रा रे कन्वर्ट हबो ठीक अछि द आंसर विल बी सी बर्ड। Which cylindrid is called the Portuguese man of war? That is answer is Physalia ठीक अछि। The mesoglea in cylindrids is what? The cellular jelly, non-cellular gelatinous layer, liquid xylem, muscle tissue. Mesoglea under कौन non-cellular gelatinous layer present थिबो।
सेलुलर जेली रही पारिब नाही, लिक्विड सेलम भी रही कारण एम आस एलिमेंट, मसल टिश्यू भी प्रेजेंट रही। ठीक अच्छे। हाँ, टेनोफोर्स आर ऑल्सो नोन एज व्हाट? टेनोफोर्स कौन कहा जाए? कॉम्ब जेलीज, सी वालनट्स, सी फैंस, बोथ ए एंड बी। बॉडी सेल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर थाए कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉम्ब जेली भी कहा जाए। बॉडी शेपटा तुम रही ना कौन अक्रोट शेप रही सी वालनट भी कहा जाए। सो द आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। Which of the following features is unique to Stenopora? Presence of endoblasts, 8 rows of ciliated comb plates, organ system level organization, radial and bilateral symmetry. 8 rows of ciliated comb plates. कौन कहा comb jellies। ठीक अच्छे बॉडी से स्ट्रक्चर रोचे कि जेली और स्पंजिला सॉरी हाइड्रा एम ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बाहर को इजिली देखा जाए। What type of symmetry is shown by टेनोफोर्स? What type of symmetry is shown by टेनोफोर्स? टेनोफोर्स को कहा जाए बायलैटरल ना सिमेट्रिकल ना रेडियल ना बायरेडियल, रेडियल और बायरेडियल। Level of body organization in टेनोफोर्स is what? टेनोफोर्स मनकर बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन कौन रोचे? आंसर होची टिश्यू। ओके, सेल मल्टीपल सेल माने अरेंज होके टिश्यू फॉर्म करते हैं। गोटे गोटे टिश्यू सिस्टम गोटे गोटे प्रॉपर प्रोसेस पे इंक्लूडेड थाए। व्हाट इज द मोड ऑफ डाइजेशन इन टेनोफोर्स? टेनोफोर्स मानकर डाइजेशन रो मोड कौन रोचे? तमरो बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। आउटर सेल थ्रू भी से एब्जॉर्ब करि परछंती एंड फूड बॉडी भीतर को गले भी से न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट हो पारुछि। तो डाइजेशन इन टेनोफोर्स आर बोथ एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। Which of the following structures are used for locomotion in टेनोफोर्स? टेनोफोर्स मानकर लोकोमोटरी ऑर्गन्स कौन ना सिलिया ऑन कॉम्ब प्लेट्स जेमती रोचे या तुम आठरे कॉम्ब लाइक प्लेट स्ट्रक्चर रोचे से तुम कौन सिलियरी स्ट्रक्चर बाहर जोटा कि बॉडी आउटर पार्ट को भी रोचे जहाँ थ्रू कि टेनोफोर ऑर्गेनिज्म माने लोकोमोशन करि पारछथि। The answer will be B. Which of the following is absent in Ctenophora but present in Nidaria? Ctenophora रे अछि but Nidaria रे नहीं। सॉरी उल्टा करी, Nidaria रे अछि Ctenophora रे नहीं। टेंटाकल्स में कॉम्प्लेक्स में कोलोब्लास्ट में निडोब्लास्ट अछि कोते Nidaria रे। The answer will be Nidaria. Nidoblast. Coloblast in centrophores, stenophore are used for what? Digestion, sensory function, capturing prey, movement. प्रे को कैच करबा पई एई कोलोब्लास्ट सेल माने प्रेजेंट थांती माने कैप्चर करी नियंती। ठीक अछि, आंसर विल बी कैप्चरिंग प्रे। तंका शिकार को समाने धरिबा पई कोलोब्लास्ट सेल यूज हुए। टेनोफोर्स exhibit which type of reproduction? Stenopore exhibit which type of reproduction? The answer will be sexual type of reproduction. What kind of fertilization and development occurs in Ctenophora? Ctenophora को type रो fertilization होची और development होची। External fertilization और direct development। सी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन माने कौन ना फीमेल बॉडी रे आउटसाइड रे फ्यूजन होचे मेल और फीमेल रो जो कौन गैमेट और सेटा तमरो कौन डायरेक्ट डेवलपमेंट होचे माने कौन ऐसे डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट हे पाछ कोन से लार्वा की एग रे रिक्वायरमेंट पड़ू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एग्जांपल ऑफ टेनोफोरा? फाइसेलिया तो नुहे, यूबेलिया नुहे, स्पॉन्जिला भी नुहे, तो प्लूरोब्राचिया हबो ओटे एग्जांपल।
Ctenophores are what? Exclusively freshwater, no marine, no both marine and freshwater, no only parasitic. Exclusively marine. Ctenophores organisms are marine organisms. Bioluminescence is commonly seen in sponges, cnidarians, ctenophores, annelids. ଆର୍ଥ୍ରୋ ମାନଙ୍କର ନଥିବ, ସ୍ପଞ୍ଜେସ୍ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ନିଡାରିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ତ ଅଛି କାହାର ନା ଟେନୋଫୋର୍ସ ମାନଙ୍କର ଅଛି। ବାୟୋଲୁମିନେସେନ୍ସ ମାନେ କଣ? ତାଙ୍କ ବଡିରେ ଏମିତି କିଛି ପାର୍ଟ ଥିବ ଯୋଉଥିରେ କି କେମିକାଲ ଗୁଡାକ ସହିତ ଲାଇଟ୍ ରିଆକ୍ସନ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ହେଲା ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଜାଗାଟା ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଏମିଟ୍ କରିବେ, ତାକୁ କୁହାହଉଛି କଣ ନା ବାୟୋଲୁମିନେସେନ୍ସ ପ୍ରୋସିଜର। ଓକେ, ଦେନ୍ ଯୋଉ ରାତିରେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ଏଇ ଅର୍ଗାନିଜମ ମାନେ ଯୋଉଠି ଯାଉଥିବେ ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଗଲେ ଏମାନଙ୍କର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଗୁ କିଛି ଜାଗାକୁ ଲାଇଟ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଓକେ, ଦ ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ଇନ୍ ଆସ୍କି ହେଲମିନ୍ଥେସ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ? ନା ତାଙ୍କର ଟୁ ସେଲମ୍ ଅଛି ନା ବିଲକୁଲ ସେଲମ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାଙ୍କ ବଡିରେ ଯାହାର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଆଇଡିଆ ଦଉଛି କି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଅର୍ କ୍ୟାଭିଟି ଟାଇପର ରହୁଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଫେକ୍ କ୍ୟାଭିଟି ବୋଲି କନସିଡର କରିକି ତାକୁ pseudocellular ବି କହିପାରିବା। The body symmetry of asci helminthes is what? Helminthes ତମର bilateral ରହିବ। ଯୋଉଟାକି equally ଦିଟା left or right ର half convert କରିପାରିବ। Which of the following is the level of body organization in asci helminthes? asci helminthes ରେ କି ତମ body level କଣ ରହୁଛି ନା organ system level ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, which of the following types of digestive systems is found in nematodes? Incomplete ନୁହେଁ, absent ସେଟା ବି ନୁହେଁ, କାରଣ ଡାଇଜେସନ ହବା ନିହାତି ଦରକାର, ଏଥିରେ ଫୁଡ ସେମାନେ ଇନଟେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ତମର ରହିଲା କଣ ଭାସ୍କୁଲାର କ୍ୟାଭିଟି, ଏଠି ତମର ଡାଇଜେସନ ହୁଏନି, ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଟାଇପର ହବ ଆନ୍ସର। ଠିକ ଅଛି, ତମର ପ୍ରପର ଗୋଟେ ଫୁଡ ଇନଟେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାଉଥ ପାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସକ୍ରିଟା ରିଲିଜ ହବା ପାଇଁ ଆନସ୍ ପାର୍ଟ ବି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଛି। Which of the following is a correct feature of asci helminthes? asci helminthes ତମର ascolemate ନୁହେଁ, pseudocellular, segmented ନୁହେଁ, radial symmetry ନୁହେଁ, ସେଟା bilateral, pseudocellular ହଉଛି unsegmented, ଠିକ ଅଛି, bilateral symmetry ଏଇଟା ବି ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଆଗକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଓକେ, sexes in asci helminthes are what? ଆକ୍ସନ ମାନେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ପସିବଲ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କର ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ବି ହଉଥିବ। ସେପାରେଟ ମାନେ ତାଙ୍କର ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ ସେପାରେଟ, male and female are separate, ତ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସେପାରେଟ ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଅର୍ଗାନ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିବ କଣ ନା ଡାୟୋସିୟସ୍। ଆନ୍ସର ହବ ବି। ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ ଇନ୍ asci helminthes is what? ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାନେ ଫିମେଲ ବଡି ଭିତରେ ଗ୍ୟାମେଟ ମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି। Which of the following is an example of a parasitic asci helminth? parasitic ମାନେ ଯିଏ ଆଉ କାହା ବଡିରେ ରହିକି ତା ବଡିରୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଆଉ ତା ବଡିରୁ ସକ୍ କରିକି ନିଜେ ସର୍ଭାଇଭ କରିପାରିବ। ମୋଷ୍ଟଲି ସେଟା ଦେଖାଯାଏ କଣ ନା ଆସ୍କାରିଆ ଲିମ୍ବ୍ରିକଏଡ୍ସରେ ହେଲା। The causative agent of ascariasis ହଉଛି କିଏ ନା ଆସ୍କାରିସ୍ ଲିମ୍ବ୍ରିକଏଡ୍ସ, ଏବେ ହିଁ କହିଥିଲି ସେ ବଡି ଭିତରେ ରହିକି ଡିଜିଜ କୁ ଇଜିଲି ସ୍ପ୍ରେଡ କରିପାରିବ। The body of asci helminthes is what? Flat and segmented, segment ତ ନାହିଁ ମୂଳରୁ, cylindrical and unsegment ହେଇପାରେ, round and segmented, segment again ନାହିଁ, ciliated and salamated and body cavity ନାହିଁ, answer ହବ B, cylindrical and unsegmented. Which of these is a free living nematode? Fasciola, Wuchereria, Ascaris, Ravidity. फ्री लिविंग नेमाटोड्स रहुଛି, ତ आंसर ହବ ଆସ୍କାରିସ୍ ହବନି, ଏବେ ସେ ଅଲଗା ରେଟ୍ ହେଲା। एंड ତମର କଣ ଓଚେରେରିଆ ବି ହବନି, ଫେସିଓଲା ବି ହବନି, ସେ ହିସାବରେ ତମର କି ରହୁଛି ନା ରାବିଡିଟ୍ସ ରହୁଛି। Members of phylum Platyhelminthes are diploblastic, coelomate ନୁହେଁ, ट्रिप्लोब्लास्टिक, coelomate ତ बिल्कुल ନୁହନ୍ତି, ତ आंसर ଦିଟା ଠିକ ହବନି। ट्रिप्लोब्लास्टिक coelomate ତାଙ୍କର ବି ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ आंसर ହବ सी, ଆଉ କୋଉ ଅପସନରେ coelomate ନାହିଁ।
Which of the following is a characteristic feature of platyhelminthes? Segmented body with joint appendages? No. Chalk dorsoventrally flattened body? ସେଟା ଠିକ ଅଛି. Radial symmetry? No. Pseudocoelom? No. The answer will be B. What type of body symmetry is found in platyhelminthes? Asymmetrical, radial, bilateral, biradial. Bilateral ମାନେ କଣ equal left and right part ଆମେ ପାଇପାରିବୁ. Level of organization in platyhelminthes ରେ କଣ ରହୁଛି? Cellular level ନୁହେଁ, tissue level ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ତୁମେ ପାଞ୍ଚଟା already phylum structure କରି develop ହେଇଗଲାଣି, ତାର structure ନିହାତି organ system level ଯାଏଁ ରହୁଛି. Platyhelminthes lack what? Nervous system ଅଛି, circulatory and respiratory system, reproductive system and excretory system. according to answer ତୁମର କଣ ହବ ନା circulatory system ଆଉ respiratory system ତମର ପ୍ଲାଟିହେଲ୍ମinthes ନାହିଁ. ଠିକ ଅଛି. Sorry. Which of the following is a free living platyhelminth? PNK, Latinia, Fasciola, Digesia, Ascaris. Answer about Digesia. बाकी तीनटा जाक तुम्हारा नहीं. Which of the following is a parasitic flatworm causing liver fluke infection in sheep? Fasciola hepatica. Liver fluke infection होची and liver term सहित किए linked अछि ना hepatica. The answer will be Fasciola hepatica. Taenia cilium pox tapeworm is an example. Pox tapeworm माने जो pig मानक body रे ये tapeworm present थाए ना. Brinno कोना flatworm. Which of the following is not a feature of platyhelminthes? Triploblastic, intergerminal नहीं, acelomate नहीं, isolomate जो कौन pseudocoelomate, complete digestive system present अच्छी, no, flame cells for excretion. Digestive system ही सारे present नहीं, ठीक है जी. Flame cells in platyhelminthes function in digestion, circulation, respiration, excretion and osmoregulation. Excretory system हिसाब flame cells मैंने act करते हैं कि body रा used सब कौन output और तुम्हारा कोई पर excreta सामान्य release कर दिया through flame cells. यानी body temperature को भी सामान्य regulate करके रखते हैं. Hermaphroditism is seen in what? Ascaris, leech, tinea and hydra. Answer about tinea. तो मैंने तुम्हारे both male and female reproductive parts present रही. Which of the following parasites is ribbon-like and highly adapted to living in human intestines? Tinea. Fasciola नहीं, Ascaris भी नहीं, Wuchereria भी नहीं. Then also annelids. The body of annelids. Annelids में मैं भी पढ़ती है आर्धो में मना करा body part unsegmented and cylindrical. अगर तो highly segmented हो जो unsegmented तो है ही मेरी बनी segmented and cylindrical होती है आंसर. Annelids are triploblastic and acelomate. No. Triploblastic ठीक अच्छी and celomate आंसर ठीक अच्छी. तापर ट्रिप्लोब्लास्ट pseudocoelom और हमको जिबान नहीं था प्रो कैविटी अच्छी and हमका तीनटा germ layer अच्छी so B will be the answer. Which of the following shows metameric segmentation? It is earthworm. बाकी मानकर body रे किसी segmentation ही ना. What kind of circulatory system is present in annelids like earthworm? तो सर्कुलेटरी सिस्टम को टाइप रो अछि ना तमरो क्लोज टाइप रहउछि तमन तंकर ब्लड वेसल्स कैपिलरीज ता थ्रू रही तंकर सर्कुलेशन होछि. एक्सक्रीशन इन earthworms occurs through what? कात के तमर earthworm मानकर एक्सक्रीशन होछि तमरो नेफ्रिडिया अछि. ग्रीन ग्लैंड्स कहा रहउछि ना प्रॉन जमन मल्टीपल ट्यूब कहा रहउछि तमरो केला तो इंसेक्ट्स मान होछि प्लेन सेल करला तमरो बैक्टीरिया मिलते से मानकर रहउछि. ठीक अछि.
The next दिया होची कारण आर्थ्रोपोड annelid organism मानकर excretory system. The locomotion in annelids is aided by what? Seta. Okay, fins नहीं से मतलब माछर मतलब fins रहिबो ciliary ciliary structure रहिबो मतलब अछि सेटा तो मतलब annelid मतलब सेटा मोस्टली अछि locomotory organ. Which of the following annelids is dioecious? Dioecious माने मेल और फीमेल मानकर सेपरेट समान तानी मतलब कहइतले एग्जांपल आर्थोम लिचेस एमानकर बॉडी रे बोथ मेल और फीमेल रो बॉडी पार्ट अछि और माने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अछि ओनली नेरिस रो नाही तंकर मेल और फीमेल सेपरेट तो बोथ सेपरेट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अछि. The body cavity of annelid is what? True cellum माने सीजोसेल जोड़ा कहउछि true body cavity present अछि. Which of the following is a blood sucking parasite among annelids? आदम नुहे मेरिस नुहे पेरोडिनारिया नुहे सर्कुलेटना हबा डिग्रीज जाना का डिग्रीज तो annelid अंडर में आसुनी ठीक अछि. Then which marine annelid is dioecious and has well developed parapodia? ठीक अछि. Annelid जेके dioecious समान तार मेल और फीमेल अलगा अछंती and तार well developed parapodia सब रहछि. तो parapodia छाड़ दियो खाली dioecious माने ही आंसर आसी कि नेरिस. Okay. Arthromes and leeches are what? Dioecious, no. Hermaphrodite, yes. Samani monoecious, asexual, no. Unisexual but sterile, no. Dioecious or sorry, hermaphrodite or monoecious. So the answer will be B. Which of the following organisms has both closed circulatory system and true xylem? Close भी रहिबो Ascaris, atom, fasciole, tenuis जो close circulatory system है only atom रे अछि and तार body cavity भी true वाला अछि. तो आंसर होगा atom. Which of the following is the largest phylum in the animal kingdom? Basically arthropoda होते भागीदारी नहीं सब जिन सब कुछ explanation था किसी का true था. Answer is true. That is true. Sun is there. Earth is there. Why they are there? There is no answer. Arthropods have a body cavity that is what? True xylem with homocell. एटा मन रखिथिबो ठीक कारण हम स्लाइड डिस्कस करिनो आर्थ्रोपोड मानकर बॉडी रे ट्रू माने बॉडी कैविटी अछि ता ना होचे हेमोसेल. Then what kind of body symmetry do arthropods exhibit? Okay, body cavity कौन तो जो body symmetry arthropods मानकर कौन रहउचे ना bilateral symmetry माने लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाफ रे माने कन्वर्ट हेई पारे. Segmentation in arthropods is absent, external only, internal only, both internal and external. Both side to तंकर रहउची कोन segmentation रहउची body part रे. The body of arthropod is divided into what? Head, thorax and abdomen. कहथिल ना head, then thorax, then तमर abdomen part रहउची. The answer होगा C. The exoskeleton of arthropods is made up of what? Chitin. Chitinous exoskeleton are present in arthropods बोली हमें स्लाइड रे पढ़िथिले तो chitin भी present होची. Which of the following respiratory structures is not found in any arthropod? कौन रहउची भाई खाऊ भी arthropod माने पाउनी केवल तने पाइबो कातरे सॉरी बुक लंग्स ट्रैकिया और गिल सिस्टम ए तीनटा जाक अछि बोली हमें पढ़िलो स्लाइड रे ठीक अछि. लंग्स एंड अल्वेओली एमानक सब कॉर्डेट्स मानक पार्ट को आसीगला तो आंसर विल बी डी तंक दरे न थाए. सर्कुलेटरी सिस्टम इन आर्थ्रोपोड्स आर क्लोज्ड सॉरी आर्थ्रोपोड माने प्रॉन टाइप रे कटेबे सेमानकर ओपन ब्लड टा डायरेक्ट कोन हो ब्लड बाथ हला बेले रिलीज हो. Which is the main excretory structure in insects like cockroach? Main excretory system malpighian tubules कहार कहथिनि मु सब insects मानकर मोस्टली थाए हला the prawn पचराई थंदा एठी आंसर थंदा green glands. Which of the following is not an arthropod? Scorpio arthropod, earthworm annelid, butterfly arthropod, crab arthropod. The answer will be earthworm. In which arthropod are green glands used for excretion? कौन कहती prawn अब आंसर
ठीक है। Which of these arthropods is a vector for malaria? Vector which carries the malaria parasitic, ठीक है। से हो तमर किए ना मस्किटो, मस्किटो प्लाज्मोडियम को कैरी करे और होस्ट बॉडी से छाड़े। तो से किंतु कम तो मीडिएटर मझिरे से कैरी करके निए। Which of these arthropods shows social behavior and division of labor? which honey bee, हनी प्रोडक्शन कला माने वर्कर बी मानकर काम गोटे थाए, क्वीन बी रो काम गोटे थाए, ठीक है। Which arthropod is famous for producing silk? को आर्थ्रोपोड तमरा सिल्क प्रोडक्शन करे? मॉथ सिल्क वर्म, वैसे मस्किटो में मॉथ ने टर्माइट भी नहीं, तो सिल्क टर्माइट पाट खाई जाए से टाइप रो। मस्किटो के मशा जो तुमरा कोन ब्लड सक करछे, मॉथ माने छोट पोको सब जो माने कोन ककुन ए सब बनेबे। Then what is the nervous system of arthropods like? आर्थ्रोपोड का नर्वस सिस्टम कौन अच्छे? तो बोला वेंट्रल नर्व कॉर्ड विथ पेयर्ड गैंग्लिया, हम कहते, ठीक है। कंपाउंड आईज आर फाउंड इन व्हाट? आर्दम रची ना कॉकरोच रे अछि, बेटा केंती अछि, ठीक अछि। मॉल्युस्का एसिलोमेट सेगमेंटेड, सेलोमेट अनसेगमेंटेड, सेगमेंटेशन का नाही तो अनसेगमेंट आंसर हबो। एसिलोमेट तो नहले जो सेलोमेट और बॉडी ट्रू कैविटी अछि, तो सेलोमेट और बॉडी सेगमेंटेड नहीं। Body symmetry in mollusks is what? Bilateral, mean equal left and right half मिली परिबो। Which of the following is the characteristic feature of mollusk? कि तमरा जो कोन अब तो mollusk को इंक्लूड होची। मस्कुलर फुट जहा थ्रू रे कि समाने मूवमेंट करि पारंती, फुट सक करि पारंती, ठीक अछि। Mollusks typically have what? Jointed appendages, no. Parapodia, no. Soft body covered by hard shell, yes. जो कोई मन किने अंतबा snail. The cellum in mollusks is what? Reduced and around the kidney, gonads and heart. Okay. The excretory organs in mollusks are what? Nephridia, kidneys, canina, malpighian tubular insect manakara, flames, diarrhea manakara illa, cell phase and green glands तमरा रहला कार फ्रंट ऑफ बाकी रहला कि नेफ्रिडिया तो आंसर हबो एटा। Which structure in mollusks is used for scraping foods? Food को से ट्रांसफर ना रेटिब्रा, स्लाइड में पढ़थिले। Which one of the mollusks is unsegmented? कि unsegmented होची फ्रंट और बॉडी सेगमेंट अछि, नीच रवि अछि और दोम रवि अछि, तो नाही कारण ऑक्टोपस रो अछि। Which of these mollusks is terrestrial, माने लैंड रे तुमके मिली परिबो? ऑक्टोपस पानी रे थिबो, यूनियन वेलिगस में पानी रहले, पिला ही तमरा जो तुमको स्नेल टाइप रे आपको स्नेल टाइप का स्ट्रक्चर होचे से माने रहले कान जो कोठी ना टेरेस्ट्रियल तमर लैंड सरफेस रे पाइबो। Which of these mollusks has a reduced or absent cell? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस तो कहले सेल ही नाही, मोस्टली सेल नाही, हार्ड कवरिंग सिस्टम किछि ता ऊपर माने तकु हाइड करेला वाला नाही। Which of the following is not a mollusk? Ferentima, Sepia mollusca, Unio, Dentalium, ये सब तमरा mollusk अंडर जाउछि ना नहीं MCQs रे ही नाही करछ। Which of the following classes in mollusks includes highly advanced marine animals with closed circulation? Gastropoda, bivalvia, cephalopoda, Saccopoda. Highly advanced marine with closed circulation होछि कोन ना cephalopoda। गोटे तुमरा कोन अछि ना क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन, बाकी सबुतर अछि तुमरा ओपन टाइप ए प्रीवियस गोटे क्वेश्चन भी हमरा देखितले। The mantle cavity in mollusks is involved in what? Digestion, respiration and excretion, circulation, locomotion। digestion तो हे परिबनी, circulation and locomotion cavity थ्रू हे परिबनी, ओनली सेही गैप थ्रू रे respiration और excretion होछि बोले हम साइड पे पढ़थिले। Echinoderms are exclusively what? Freshwater animals, no. Terrestrial animals, no. Marine animals, yes. ସେମାନେ true level properly marine water रे survive कर परिबे, आ कोनोसी मीडियम रे कर परिबे नाही।
Echinoderms have which type of body symmetry as adults? ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲାର୍ଭା ଷ୍ଟେଜରେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ବାଇଲେଟ୍ରାଲ ମାନେ ଇକ୍ୱାଲ ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ପାର୍ଟ ପାଇପାରିବ ଅର୍ ହାଫ୍ ପାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟାମେରିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସିଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ଯେକୌଣସି ଏଣ୍ଡରୁ ତମେ ଯଦି ମିଡିଲ ଦେଇକି କଟ୍ କରେଇବ ତ ସେମାନଙ୍କର ବଡି ଇକ୍ୱାଲ ଭାବରେ କନଭର୍ଟ ହବ ତ ରାଡିଆଲ ସିମେଟ୍ରି। Which type of symmetry is seen in echinoderm larva? ତା ହେଉଛି bilateral. Echinoderms have a skeleton made up of what? जो calcareous ossicles ଆମେ ପଢିଥିଲେ that is calcium carbonate plates or ossicles. Echinoderms have which type of cellum? Cellum ମାନେ କ'ଣ କୋଉ ଟାଇପ ର ବଡି କ୍ୟାଭିଟି ଅଛି? ଆମର true cellum ଅଛି। Echinoderms possesses a unique system called what? Water vascular system. ଯାହାଥିରେ ସେମାନେ food collection, respiration, ତୁମର digestion, excretion ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ ସେମାନେ ତା ଲୋକମାନେ ସବୁ ତା ଥ୍ରୁରେ ହିଁ କରିପାରିବେ। What type of digestive system is found in echinoderms? ତାଙ୍କର ଥାଏ କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ଲିଟ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ମାଉଥ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ଏନସ୍ ରହୁଛି ଏକ୍ସକ୍ରିଟା ରିଲିଜ ହେବା ପାଇଁ। What kind of circulatory and respiratory system do echinoderms have? Circulatory system କୋଉ ଟାଇପ ର ରହୁଛି and respiratory system କୋଉ ଟାଇପ ର ରହୁଛି? ତାଙ୍କର circulatory system ବଡିରେ ବିଲକୁଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ and ତମର respiratory system ତମର କ'ଣ ନା reduced ଟାଇପ ର ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆନ୍ସର will be C. ଗିଲ୍ ଚାର୍ଟ ଏସବୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ୱେଲ୍ ଡେଭଲପଡ୍ ବି ତମେ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଲଙ୍ଗସ୍ ତ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। Which of the following is not a function of the water vascular system? ଗୋଟେ ତାର water vascular system ର ଫଙ୍କସନ ନୁହେଁ। ଲୋକୋମୋସନ ତାର ଫଙ୍କସନ, ଫୁଡ କ୍ୟାପଚର ତମର ଇନଜେଷ୍ଟ କରିବା ସେଟା ବି ତାର ଫଙ୍କସନ, ରେସ୍ପିରେସନ ଫଙ୍କସନ, ଓନ୍ଲି ଫୁଡକୁ ସେ ଏକ୍ସକ୍ରେଟ୍ କରିପାରେ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ତାର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆନସ୍ ରହୁଛି। The body wall of echinoderms is covered with what? Spiny or tuberculated skin, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ echinoderm ବୋଲି ବି କୁହାଯାଉଛି, super spiny skin. Which of the following is an echinoderm? Asterias. Reproduction in echinoderms is usually what? Sexual ହିଁ ହବ, तो sexual option ଏଠି ଗୋଟେ ହିଁ ଅଛି, sexual with external fertilization. External fertilization ମାନେ female body ବାହାରେ gamete ମାନଙ୍କ ଭିତରେ fusion ହେଉଛି। Development in echinoderm is what? Indirect with larval stage. ମୁଁ ପଢିଲି ନା larva ରେ ତୁମର bilateral symmetry and ତୁମର adult time ରେ radial, ତ larva stage ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ indirect development. Which of the following structures help in locomotion in echinoderms? following ତୁମର echinoderms ରେ କିଏ ତମର ହେଲ୍ପ କରୁଛି ନା ତୁମର ରହିଲା କି ଟ୍ୟୁବ ଫିଟ୍, କାହାର? echinodermata ମାନଙ୍କର। Which of the following echinoderms has a globe-like body and moves using spines and tube feet? Echinus, ମନେ ରଖିଥିବ, ଯେମିତି ବୁଝାନି ସେଟା ମନେ ରଖିଥିବ। Phylum Hemichordata was earlier considered a subphylum of what? The chordata. First ତାକୁ consider କରାଯାଉଥିଲା chordata ର subphylum ତା under ରେ ରଖିବାକୁ। Hemichordates have a body divided into what? Proboscis, ये टाइप ର स्ट्रक्चर थिला, तापर आसला कोलार, ये टाइप स्ट्रक्चर होला, तापर एमती गोटे स्ट्रक्चर थिला, एटा तुम कोन कहना ट्रंक पार्ट। ठीक अछि, तो आंसर हबो बी। Which of the following is a common example of hemichordata? Balanoglossous, एटा मन रखो, ए ना जो लिखले बना आखि बुझी सेही टिक मार दो। Echinoderm is hemichordata under. The notochord in hemichordates is what? Obviously absent, that is these are under non-chordates. What type of circulatory system is found in hemichordates? Hemichordates से तुम्हारा कौन होता है? Open type of circulatory system, तुमने कहना blood bath वाला संगर flow हुए। Which of the following systems are absent in hemichordates? Excretory digestive system, nervous system नहीं, circulatory system, सब digestive system nervous system अच्छी, circulatory excretory system present अच्छी, respiratory reproductive system भी अच्छी, respiratory and respiratory system absent अच्छी।
Okay. Hemichordates have which kind of digestive system? Hemichordates ମାନଙ୍କର digestive system କୋଉ type ର ରହୁଛି ନା complete type ର ଅଛି, mouth ବି ଅଛି and ତାଙ୍କର nose ବି ରହୁଛି। The larva of hemichordates resembles what? Echinoderm larva। କାରଣ ବାକି ମାନଙ୍କ similar ନୁହନ୍ତି। Okay. Hemichordates reproduce mostly by sexual reproduction। ଏଠି sexual reproduction only ତମର ରହୁଛି କଣ third option ରେ with external fertilization ମାନେ body ବାହାରେ fusion ରହୁଛି। Which of the following is not a characteristics of hemichordata? hemichordata characteristics କୋଉଟା ନୁହେଁ ନା circulatory system open ଅଛି, ଆମେ ଉପରେ ଦେଖିଲେ proboscis gland expression ବି ଅଛି, ତାପରେ କଣ gill slits present ତ respiratory ବି ଅଛି, true notochord present ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେଟା present ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଲେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ନା non-chordates ଅଣ୍ଡରରେ। Okay। चलो ये क्वेश्चन रहला हमर आज। जो माने एसएसबी टीजीटी एंड आरएसटी सब नेक्स्ट आधा एग्जाम एग्जाम आसुची तापे प्रिपेयर यदि केमिस्ट्री पे प्रिपेयर कर चाहौ छ तमे ई साइड जो व्हाट्सएप नंबर दिया है छी तुम हेचरे कांटेक्ट करि परिबो। ठीक अछि, कांटेक्ट करिकि क्लास जॉइन करि परिबो। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हमें देखिबा कोन ना फाइलम कोडेट्स। फाइलम कोडेट्स अंते जहा जहा सब क्लासेस अछि the classes सब पढ़िबा with examples and MCQs। Okay, तो आज में इतना। Thank you।